Okay, can you see the slides? Yes, sir. Yes, sir. So I think we should start the lecture. This is lecture 3, which is basically design of doubly reinforced beam and flexure. In lecture 2, we studied the design of singly reinforced beam and flexure, in which I told you that singly reinforced beam is that beam in which we provide reinforcement only in the tensile region of the beam. Clear? If you remember, the singly reinforced beam, in case of singly reinforced beam, we provide tensile reinforcement in the bottom if it is a simply supported beam. There will be stirrup, and there will be two bars in the top, but those bars are provided just to hold these stirrups. These are not acting as a, these will act, but we are not considering these two bars as a compression reinforcement. Clear? But now in this case, in case of doubly reinforced beam, we will calculate these bars basically based on the actual demand. Clear? But Samari, so doubly reinforced beam is the Yes, beam sir. in which we provide tensile reinforcement as well as compression reinforcement. और ये किस केस में होगा? When the calculated reinforcement or design reinforcement exceeds the maximum reinforcement limit of singly reinforced beam and the size is restricted. The material properties are fixed, size is restricted, so then you can enhance the capacity of the beam by providing reinforcement in the compression region as well as in the tensile region. Okay, so it will basically give you a doubly reinforced beam in the flexure. Okay, अच्छा, इस पर एक एग्जांपल कर देते हैं, ये मजीद क्लियर हो जाएगी. For example, there is a beam, simply supported beam, which is subjected to uniformly distributed loading of 2.35 kip per foot. Clear? And the length of beam is 25 feet. Now the load given is directly, it is the factor load which is acting on this beam. which service load वगैरह सल्फेट ये सारे इसमें इंक्लूडेड हैं और फैक्टर्स भी मल्टीप्लाइड है इसमें. तो this is basically WU factor load है. Clear? And the material properties are FC prime is 3 kSi and Fy is 60 kSi. And what is the section? The size of the beam is 12 inch is the width of beam and the depth of beam is 18 inch. Okay, so the material and geometric properties you know, and you also know the length and load which is acting on the beam. Clear? Acha. Now the first step is to calculate the demand moment, that is mu, which will be equal to WU L square divided by 8. Quickly जरा मुझे बताइए शाबाश. 2.35 multiplied by 25 square divided by 8.
183.6. अच्छा, इसको 12 में मल्टीप्लाई भी करें, कन्वर्ट इट इनटू इंच के 220.13 inch cube. Okay, this is the demand moment acting on the beam. अच्छा, अब आपको खैर डायरेक्टली भी पता चलेगा कि what was the maximum capacity of this beam. Maximum capacity of the beam is a singly reinforced beam. ये आप लोगों ने कैलकुलेट किया है ऑलरेडी, मैंने आपको सेक्शन दिया था 12/18 इंच जी 1768. 1768 inch. Now you can see that the maximum capacity of the beam, if we design it as a singly reinforced beam, it is 1768 inch. And the demand moment acting on the beam is 2203 inch skip, which basically exceeds this maximum limit. Okay. Now, how to basically design the beam such that it can take this much demand without compromising the ductility. अच्छा, ये जरा स्टेप बाय स्टेप कर देते तो आपको पता चलेगा. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू डिजाइन इट, मैं जरा सिंपली आप लोगों को समझा देता हूँ पहले इन ए वेरी सिंपल वे दैट व्हाट इज अ डबल रिइंफोर्स्ड बीम. फिर उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप ये करेंगे. ये वैल्यूज आप बस याद रखें. अब इसको जरा सिंपली पहले समझते हैं. इफ यू कैलकुलेट रिइंफोर्समेंट, if we calculate reinforcement based on this demand from mu, if we calculate the design reinforcement, so you know that AS is equal to mu divided by phi Fy d minus A by 2, and A is equal to 0.85 Fc prime d. Assuming in the first trial A is equal to 0.2 d, you can calculate based on the trial and error, you can calculate the design reinforcement AS. अच्छा, ये मुझे बताए A is coming from the calculation, it will be greater than AS max or less than AS max? Based on the given demand, the calculated reinforcement will be greater than the AS max or less than AS max? Greater than, sir. Of course it will be greater, because you can see that this is the capacity corresponding to maximum reinforcement and the demand is greater than that. Okay, so AS will be greater than. तो आप ट्रायल एंड एरर से जरा क्विकली कैलकुलेट करें. AS की वैल्यू जरा कैलकुलेट करें. शाबाश. A is equal to, अगर हम 0.2 डी करें तो it will give you 3.1 इंच. यहाँ पर इसको पुट करें. mu की वैल्यू आपके पास है, it is 2203.13 inch skip. Phi is 0.9. Fy is 60. 1.57. AS is 1.57. दोबारा जरा आप चेक करें, ये ज्यादा होगा.
2.93. 2.93. अब इसमें जरा पुट करें एंड recalculate the value of a. Sir, A is the final value 3.33 something there. Finally, after trial and error, the a is calculated is 3.34. Sir, 3.26. नहीं, finally ये value मेरे ख्याल में ठीक है. After trial and error, the final value will be 3.34 inch square. Now this is the calculated reinforcement based on the given demand. But you know that the maximum reinforcement which we can provide in the beam, it is how much? Smax इसके लिए कितना है? आप लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है? अभी आप लोगों ने मुझे वैल्यू बताई ना? For 12 by 18 inch beam, 2.79. 2.51 inch square. 2.5. It is the maximum reinforcement. 2.51 is correct. So now the calculated reinforcement or the design reinforcement, it is greater than the AS max, which is 2.51 inch square. Clear? अच्छा, अगर हम यही reinforcement provide करें, for example, if we calculate the number of bars based on the calculated reinforcement. So for example, if we are using number 6 bars, the total number of bars required will be how much to satisfy the given demand? ये जरा मुझे बताएं. 3.34 divided by 0.44. So 7.55, 7.59. sir. So almost 8 number 6 bars will be required to satisfy the given demand. This is total number of bars. Okay? आवाज आ रही है? यस सर. Yes, सर yes, sir. एक का तो एरिया एएस से भी ज्यादा आ रही है 3.62 तकरीबन. हाँ, मगर मैंने अब कहा कि एसमिक्स तो यही है ना. एसमिक्स की करस्पॉन्ड मैं टोटल की बात कर रहा हूँ. टोटल almost 8 number 6 bars will be required, but the maximum bars to be provided in the beam, the maximum bars which are allowed in the beam to satisfy the ductility requirement of the code, तो वो आप इससे कैलकुलेट कर सकते हैं. 2.51 divided by 0.54. 6 number 6 bars. 6 number 6 bar. अब इसको जरा देखें. If you are designing the beam as per ACI code, okay, then you cannot provide bars more than 6 number 6. Okay. If you provide 8 number 6 bar in this beam, what will happen? ये कोई बता सकता है? Ductility compromise हो जाएगी. So over reinforcement. It will compromise the ductility because this नहीं, वो reinforce नहीं हो जाएगी. वो reinforce का concept बिल्कुल different है. In over reinforced beam, the concrete will crush before yielding of the beam. वो तो over reinforcement नहीं होगी, मगर ये है कि आपकी जो ACI ductility requirement है, that will not be satisfied. और वो requirement क्या है? If you remember, we calculated the maximum reinforcement corresponding to this condition, if you remember.
This is fixed 0.003, and the strain in the steel was EY plus 0.003. Corresponding to this, you have calculated the relation for mixing reinforcement, and for 12 by 18 inch beam with given material properties, this for 2.5 inch square, the strain diagram will be like this at the ultimate condition. If we provide, instead of 6 number 6 bars, if we provide 8 number 6 bar, what will happen to this strain diagram? ये बता सकता है? स्ट्रेन कम होगा सर। At ultimate condition, what will happen? The strain in steel, it will be less than this value. Okay, so it will be less brittle as compared to the criteria which is set by the code. अब बात समझ आ रही है कि नहीं? Because now ET will approach toward EY, और जितना strain कम होगा at the ultimate condition, the failure will become brittle. इस तरह है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब इसको एक्सप्लेन कर देते हैं, मगर पहले ये अगर हम फॉर एग्जांपल किसी बीम को हम ड्रा करते हैं, इसकी सेक्शन अगर हम ड्रा करें, now how many bars we can provide in the beam? If we provide 6 number 6 bars in the beam, so it will satisfy the code ductility requirement. तो ये हमने 6 number 6 बार प्रोवाइड किया. अब in a very simple word, अगर हम डबल reinforced बीम की कंसेप्ट को समझना चाहे, तो ये कि 6 number 6 bars, they are the maximum bars allowed in this beam as per ACI code criteria. यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. But now from the demand we need 8 number 6 bars in the given beam. So code says that if you provide 8 number 6 bar, for example ये 2 bars ये extra मजीद required है, code says that the bars which are required in excess of maximum reinforcement, those bars must be provided in the compression zone also. You will provide those bars in the tension as well as in the compression zone. This is doubly reinforced beam concept. The bars which are required in excess of maximum reinforcement will be provided in the tension region as well as in the compression region. अब समझ गए बात को? सर ये तो ऑलरेडी प्रोवाइड नहीं है। वन बाय वन जरा क्वेश्चन करें जी। जी सर ये ऑलरेडी प्रोवाइड नहीं है सर। नहीं, ऑलरेडी प्रोवाइड नहीं है, वो तो मैंने आपको कहा था कि those 2 bars which were given in case of single reinforced beam, those were not coming from the calculation. Those were provided just to hold the stirrups. And now these bars, in this case, for example, these will be at least 2 number 6 bars, because you have given 2 number 6 bar in the tensile region. In case of singly reinforced beam,
you can provide this these two bars as 2 number 4 bar or 2 number 5 bar. आप क्लियर है? यस सर। सर जो डक्टिलिटी कंप्रोमाइज हो रही थी, स्ट्रेन जो कम हो रही थी सर, वो टेंशन अच्छा, साइड पे कम हो रही थी, अब और हमने हाँ कंप्रेशन बिल्कुल, साइड पे। उसी वजह से तो हमने ये 2 बार, उसी वजह से तो हमने 2 बार प्रोवाइड किए ना। वो आगे हम अब उस पर डिस्कशन करेंगे मजीद। मगर यहाँ तक आप समझ गए डब्ल्यू इनफोर्स बीम की, बस इन सिंपल वर्ड्स। ये जो 2 बार्स है, ये भी प्रॉपर्ली हम कैलकुलेट करेंगे। इसकी मैकेनिक्स आगे हम पढ़ते हैं कि किस तरह आप डब्ल्यू इनफोर्स बीम को ये मैंने बिल्कुल सिंपल अल्फाज में आपको समझा दिया कि आपके पास फॉर एग्जांपल 6 number 6 bar, it is the maximum number of bars allowed in the beam, but from the demand you need 8 number 6 bar. So if you provide 2 number 6 bar in the tension region, so to achieve the ductility requirement as per the code, you have to provide these 2 number 6 bar also in the compression region. यहाँ तक समझ गए? यस सर, क्लियर है। Excuse me, sir. अच्छा, अब इससे होगा क्या? Excuse me, sir. जी जी, सर कि ओवर रिइंफोर्स बीम नहीं हुआ, क्योंकि हमने ज्यादा प्रोवाइड कर दी। नहीं, और रिइंफोर्स बीम का ये कंसेप्ट नहीं है ना। मैंने आपको बताया था, और रिइंफोर्स बीम is that beam in which the concrete will crush before the steel yielding starts. The tensile before yielding of the tensile steel. और रिइंफोर्स नहीं होगा, मगर एज पर द कोड, जो कोड की क्राइटेरिया है डक्टिलिटी, इट विल नॉट बी सेटिस्फाइड। ये पॉइंट समझ गए? यस। अच्छा, अब दोबारा जरा इसको कर देते हैं। इससे होगा क्या? अच्छा, पहले इसके लिए, इस कंडीशन के लिए, when there is maximum reinforcement in the beam, so what will be the strain diagram corresponding to this condition? कोई बता सकता है what will be the strain value in the compression region? ये वैल्यू कितनी होगी? 0.003। 0.003. And what about this value? ये वैल्यू कितनी Should- होगी? ये वैल्यू कितनी होगी मैक्सिमम रिइंफोर्समेंट करेस्पॉन्डिंग? EY, हाँ, Plus this will 0.003. be equal to EY plus 0.003. यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, now if we provide because from the demand we need 2 extra bars in the tension region. अगर हम ये प्रोवाइड करें तो how it will affect the strain diagram? अब इसकी करस्पॉन्डिंग जरा मुझे बताए। ये तो सेम रहेगी वैल्यू 0.003, बट व्हाट विल बी द स्ट्रेन इन द टेंसाइल स्टील? डिक्रीज होगी, रिड्यूस होगी सर, डिक्रीज हो जाएगी। डिक्रीज हो जाएगी। तो इसकी करस्पॉन्डिंग अगर हम स्ट्रेन डायग्राम बनाएं तो इट विल बी लाइक दिस।
This will be the strain diagram corresponding to the given beam. अच्छा, अब आप देखें, ACI says that the strain in the tensile steel should not be less than this value. यहाँ तक क्लियर है? तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? So that at the ultimate load, at the crushing of concrete, the tensile strain in the steel, the tensile strain value becomes EY plus 0.003. उसके लिए हम क्या करेंगे? If we provide the same bars in the compression region, what will happen? ये जरा समझिए. If we provide the same reinforcement in the compression region, by doing so, the compression capacity of the concrete will be increased, because you know that the steel has high strength and elasticity than the concrete. So if we provide reinforcement in the compression region, so it will increase the capacity and stiffness of the compression zone. बात समझ में आ रही है आप लोगों को? Yes, sir. So the crushing, by providing compression reinforcement in the compression zone, the crushing of concrete will be delayed. Okay, so now if we provide reinforcement in the compression zone, the strain diagram will change and it will be like this. Now this is the strain diagram. When we provide compression reinforcement, so what happens, you can see that the compression strain will be reduced. When we provide compression reinforcement, the compression strain in the extreme compression fiber will be reduced. Why it will be reduced? Because now the stiffness of the compression zone has been increased by providing reinforcement in the compression zone. बात समझ में आ रही कि नहीं? देखिए आपके पास स्ट्रेन किसके बराबर है? स्ट्रेन इज स्ट्रेस डिवाइड बाय इलास्टिक मॉडुलस. आपकी स्टिफनेस अगर आप इंक्रीज करते हैं, स्ट्रेन विल बी डिक्रीज्ड. ये तो सिंपल है ना? ये पॉइंट समझ में आ रही कि नहीं? Yes, sir. अच्छा, अब अगर इस स्ट्रेन डायग्राम को देखें तो नाउ यू कैन सी दैट the beam is now able to take more load, because there is, अगर आप देखें इसमें beam, we consider the beam as failed when the compression strain in the compression zone it reaches 0.003. इस तरह है ना? beam full capacity तो हम तब कंसिडर करेंगे when the concrete compression strain reaches 0.003. अब इसको अगर आप देखें, the compression strain is less than 0.003, तो इसका मतलब ये है इसमें गुंजाइश है कि आप उस पर मजीद लोड डाल सकते हैं. उस पर अगर आप मजीद लोड डालेंगे तो what will happen? The strain in the compression zone as well as in the tension zone will be increased, and finally at the ultimate condition the same strain diagram will be achieved. and अगर आप इस पर मजीद लोड डालते हैं तो what will happen? ये strain भी increase होगी, it will reach 0.003,
and in the bottom the steel strain will also increase and it will reach this value EY plus 0.003. So finally, at the ultimate condition, you will achieve the same strain diagram which was required for maximum reinforcement. अब समझ में आ रही है? Yes, sir. So this is why we provide compression reinforcement in the beam to achieve the same ductile failure mode as per ACI 318-19, which was there for singly reinforced beam. Clear? अगर ये आप समझ गए हो तो अब मजीद हम इसकी कैलकुलेशंस पर आते हैं, मैकेनिक्स ऑफ डबल रिइंफोर्स्ड बीम। मगर ये मेन पॉइंट है इसमें, that why we provide compression reinforcement. Compression reinforcement will basically delay the crushing of concrete, and by delaying the crushing of concrete, it will achieve the ductility, the same ductility as for the singly reinforced beam corresponding to maximum reinforcement. सर जी जी सर हमने 2 बार जो प्रोवाइड किए, 2 बार नीचे सर प्रोवाइड किए, तो सर इन दोनों का सर जो इनकी जो यील्ड स्ट्रेंथ कैपेसिटी है सर वो तो ऑलमोस्ट सेम हो जाएगी, मतलब इफेक्ट उसका डिफरेंट हो जाएगा लेकिन सर उसकी वैल्यू सेम है। तो सर क्या सर इस दौरान जो सिंगल रिइंफोर्स्ड बीम है और डबल रिइंफोर्स्ड बीम में जिन पे सेम लोड पड़ा हुआ है उनकी न्यूट्रल एक्सिस सेम होंगी? नहीं, न्यूट्रल एक्सिस में डिफरेंस आएगी ना, न्यूट्रल में डिफरेंस आएगी, मगर ये है कि अच्छा इस स्पेसिफिक कंडीशन की आप बात कर रहे हैं, दोबारा जरा इनमें आपकी क्वेश्चन को नहीं समझा। इस स्पेसिफिक कंडीशन के बारे में आप बात कर रहे हैं कि इसके लिए न्यूट्रल एक्सिस डिप सेम रहेगी कि नहीं? नहीं सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि सर जब सिंगल रिइंफोर्समेंट बीम था तो सर उसमें सपोज नीचे 6 बार से ऊपर आप क्वेश्चन में जरा रिपीट कर आप सुन मुझे बताए, आपकी आवाज सही नहीं आ रही। आपका मतलब ये है कि डबल रिइंफोर्स्ड बीम की जो मिक्सिंग रिइंफोर्समेंट है उसकी करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेन डायग्राम है और इस डबल रिइंफोर्स्ड का स्ट्रेन डायग्राम इट इज सेम, तो न्यूट्रल एक्सिस डिप भी सेम होगी, यही क्वेश्चन है ना? यस सर। सर इसमें डिफरेंस थोड़ा आएगा, हम इसको ऑलमोस्ट सेम कंसीडर करेंगे? नहीं सेम होगा, क्योंकि आप देखिए वही स्ट्रेन डायग्राम है ना। न्यूट्रल एक्सिस डिप it will depend on this value EY plus 0.003 and this value that is 0.003. So if these value remain the same, so the neutral axis dip will also remain the same. हाँ, ये अगर आप जिस तरह मैंने कहा कि आप जो कैलकुलेट करते हैं उससे जाहिर है कि आप बार्स या थोड़ा सा ज्यादा आप प्रोवाइड करते हैं, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस अगर हो तो, वरना थ्योरेटिकली इट विल बी सेम। क्लियर? सर जी जी सर आपने कहा कि कंप्रेशन साइड पे जब हम रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं तो मैक्सिमम स्ट्रेन की वैल्यू 0.003 से भी कम हो जाती है, लेकिन हाँ। फिर बाद में आपने कहा सर कि ये मतलब इसमें फिर कैपेसिटी होती है कि इसमें स्ट्रेन ज्यादा आ जाए। सर तो इसकी समझ नहीं आई। हाँ, इसमें आप यानी मजीद लोड आप इस पर डाल सकते हैं। जी क्या सर रिपीट करेगा? मैंने अब कहा कि आपके पास द स्ट्रेन विल बिकम लेस देन 0.003, तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब है कि इसमें गुंजाइश है कि आप उस पर मजीद लोड भी डाल सकते हैं, क्योंकि मिक्सिंग कैपेसिटी तो हम उसको कहते हैं व्हेन द स्ट्रेन इन द कंप्रेशन जोन रीचेस 0.003। तो इसमें मजीद अगर आप उस पर लोड डालें तो फाइनली सही। अच्छा, अब हम आगे जाते हैं। जी जी सर ये जो मैक्सिमम बेंडिंग में मोमेंट होता है, ये तो सर बीम में एक पॉइंट पे होता है, मतलब पॉइंट लोड है तो सर उसमें मिड पॉइंट पे होगा।
हाँ पॉइंट हो डिस्ट्रीब्यूटर दोनों केस में यस मिड सर, पर होगा। डिस्ट्रीब्यूटर तब जी तो अब तब भी मिड पे होगा सर। तो हम ये जो सर इन्फोर्समेंट है सर, हम थ्रू आउट द बीम क्यों प्रोवाइड करते हैं? मतलब उसी पॉइंट पे प्रोवाइड करें तो भी वो काफी नहीं होगा सर? ये तो मैंने आपको लास्ट क्लास में समझा दिया था, इफ यू रिमेम्बर, कि आप इसको एंड पर कर्टेल भी कर सकते हैं इन्फोर्समेंट को। इस पे हमने डिस्कशन की थी। ओके जी सर। आप रिकॉर्डिंग जरा देखें। इसलिए तो हम कर्टेलमेंट कर सकते हैं एट द एंड, क्योंकि एंड पर इतना ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं होगा। ओके सर, थैंक यू। अच्छा, अब हम आते हैं द मैकेनिक्स ऑफ डब्ल्यू एनफोर्स बीम, क्योंकि without understanding the mechanics of double reinforced beam, you cannot design the double reinforced beam. Clear? तो इसी बीम के लिए अगर हम दोबारा ये कैलकुलेशंस करें, ये दोबारा मैं बता देता हूँ ताकि आप लोगों को सही तरह समझ में आ जाए। अच्छा, corresponding to maximum reinforcement, यानी up to maximum reinforcement, this can be treated as singly reinforced beam। यहाँ तक तो बात क्लियर है ना? Yes, sir. तो up to maximum reinforcement, you can basically draw the same stress diagram here. This is basically the depth of the compression block. ये मैं ज़रा exaggerated बना देता हूँ। This is A, and this is the tensile force, and it will be equal to, ये कोई बता सकता है? A is max into Fy, ऐसा है ना? समझ में आ रही बात? Yes, sir. And this is the depth of compression block। मैंने वैल्यू जरा ज्यादा ली, यानी जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज मैं कर रहा हूँ। एक्चुअल वैल्यू तो कम होगी। This is basically the compression force, and you know that the compression force will be equal to 0.85 because this stress is 0.85 psi prime. Now the compression force will be equal to 0.85 psi prime dA, and this A will be A corresponding to maximum reinforcement. बात समझ में आ रही है ना? Yes, sir. T is AS max into Fy, and from this you can calculate the moment capacity, which will be basically the maximum capacity of the beam. ये आप लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। It will be equal to basically pi AS max Fy d minus A by 2.
क्लियर है? Yes, sir. Really. अच्छा, यहां तक तो आप ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं, सही, बिकॉज दिस इज द मैकेनिक्स ऑफ सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम एंड इट इज वैलिड अप टू मिक्सिंग रिइंफोर्समेंट। अच्छा, अब इसके बाद जो आप बार्स प्रोवाइड करते हैं, तो बार्स in the tension as well as in the compression zone, so those bars will provide you an additional couple tension compression forces. इसको आप यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। This is the compression force provided by the compression reinforcement, and this is the tensile force provided by the tension reinforcement which we have provided in the tension zone. अच्छा, ये जो आपके पास टेंशन फोर्स है, it will be equal to A is, if we for example represent this compression reinforcement area with A is bar, so this will be equal to A is bar multiplied by Fy. And what about this force, the compression force? कोई बता सकता है? Anyone? Full FC prime into BA. A is नहीं, prime this is will be, prime. हाँ, it will be equal to the compression reinforcement multiplied by stress in the compression reinforcement. अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखें, हमने डायरेक्टली Fy लिखा in the tension zone because we know that in the tension zone it will yield, it will definitely yield. क्योंकि आप अगर स्ट्रेन डायग्राम को देखें तो at the ultimate condition the strain was equal to Ey plus 0.003. ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं इन डिटेल। तो in the tension zone the steel provided will definitely yield, but what about the steel provided in the compression zone? We don't know about that. Okay, it may yield or it may not yield, it depends on the different parameters. Clear है? जी सर। Yes. Now we can also calculate the flexure capacity provided by this couple. If we know the lever arm, ये कोई बता सकता है what will be the lever arm? सर D minus B prime. अच्छा, ये जरा अगर आपको याद हो, the distance from tension fiber up to centroid of tensile steel, we represented this by DC, if you remember. And distance from extreme compression fiber up to the centroid of compression reinforcement, this is represented by D dash or D prime. Clear? And you also know that this total distance from extreme compression fiber up to the centroid of steel, it is D, effective depth. So you can see that this distance is equal to D minus D prime. अब क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. Now
this additional couple will provide additional flexure capacity, and that capacity you can calculate phi mn, for example 2. It will be equal to AS prime, Fs prime, multiplied by the lever arm, which is equal to D minus D prime, and multiplied by strength reduction factor, that is 5. Clear? This is the Yes, sir. capacity provided by the compression reinforcement. सर जी सर यहाँ पर जो कपल हम लेते हैं ये ऐसे क्यों नहीं लेते एस प्राइम एफ वाई इंटू डी माइनस डी प्राइम फाई दोबारा पूछे, मैं क्वेश्चन को सही नहीं समझ सका। सर जो हम एडिशनल कपल से जो कैपेसिटी इंक्रीज होती है हम ऐसे क्यों नहीं लेते ड्यू टू टी एफ आई एस प्राइम एफ वाई इंटू विक्ट्री हम नहीं ले सकते, बिकॉज अगर हम इसको ले लें तो इफ फॉर एग्जांपल द कंप्रेशन रिइंफोर्समेंट डजंट यील्ड, so this will give you a conservative, and the capacity will be greater than the actual capacity. Fy तो ज्यादा होगा ना, जाहिर है Fs prime will be less than or equal to Fy, so it will be based on the Fs prime. Because we don't know that the compression reinforcement yield होगी या नहीं होगी, ये अभी हमें पता नहीं है। सही कंप्रेशन सर में तो ये किस तरह yield होगा सर? दोबारा जरा पूछें। सर ये कंप्रेशन में, सर कंप्रेशन में तो चीजें yield नहीं होती है ना, सो वो तो कंप्रेस होती है, तो yielding कहाँ से आएगी सर? नहीं, किसने आपको बताया कंप्रेशन में yield नहीं होती? कंप्रेशन में क्यों yield नहीं होगी? The compression and tension properties of steel is almost same. वो कंप्रेशन में भी yield होगी, तो कंक्रीट तो नहीं है ना। Concrete will basically crush in the compression zone and it will crack in the tension zone. But steel, it may yield in the compression as well as in the tension. Clear? It depends on the strain. If the strain value exceeds the yield strength, so it will yield. अगर वो compression हो या tension हो, दोनों केस में। क्लियर है? जी सर। अच्छा, अब इसको आप जरा देखें। The total capacity of the beam will now be equal to this phi mn max, which is coming from this, and plus this phi mn2. इस तरह है कि नहीं? Total capacity of the beam, phi mn total of the beam, it will be equal to phi mn max plus phi mn2. यहां तक कोई क्वेश्चन है? क्लियर है? यस सर। Yes, sir. Clear है sir. अच्छा अच्छा, अब आप लोगों को पता है for design we can take mu is equal to phi mn and the total demand, it is equal to the capacity. We can take this. So now the total demand may be equal to phi mn max plus phi mn2. ये क्लियर है? स्टेप क्विकली रिस्पॉन्ड करें ताकि मैं करूं। यस सर। अच्छा, यस सर, क्लियर है, क्लियर। अब इसको अगर आप देखें phi mn2 अगर हम इससे कैलकुलेट करते हैं,
phi mn2 is equal to mu minus phi mn max. अब ये जो phi mn max है, this you can readily calculate for any section with given material properties. जिस तरह आप लोगों ने कैलकुलेट किया है, यानी 12 by 18 इंच बीम के लिए आप लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है phi min max. It is 1767 इंच के. क्लियर है ना? ये तो आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर सकते हैं. And mu is the given demand. ये तो आपके पास डिमांड है, तो आप कैलकुलेट करेंगे from W H square by 8. तो इससे आप phi mn2 कैलकुलेट कर सकते हैं. And from this phi mn2 you can calculate the compression reinforcement. How? This is equal to basically phi mn2. अगर आप यहाँ पर देखें, it is phi as prime fs prime into d minus d dash. तो यहाँ पर आप जरा ये पुट करें, phi as prime is prime into d minus d dash. It is equal to, अच्छा इसको अगर हम mu minus phi mn max, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं विद mu extra. And this is the extra moment to be carried by the beam in excess of its maximum capacity, or the moment which is to be carried by the beam in excess of the maximum capacity of the beam. बात समझ आ रही कि नहीं? यस सर आ रही है. क्योंकि आप रेडीली कैलकुलेट कर सकते हैं ना. मैंने आपका डिमांड इट विल कम फ्रॉम दी WL स्क्वायर बाई 8 जो भी हो, और phi mn max ये भी आप रेडीली एक सेक्शन के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं. तो उससे आपके पास एक वैल्यू, तो फॉर एग्जांपल इसको हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं mu एक्स्ट्रा से. ठीक, तो दिस विल बी इक्वल टू, या डायरेक्टली आप ये भी लिख सकते हैं, तो ये सी बात नहीं है, mu माइनस phi mn max. इससे अगर हम ए प्राइम कैलकुलेट करें तो इट विल बी इक्वल टू mu माइनस phi mn max डिवाइड बाई phi fs prime into d minus d dash. So with this relation you can calculate that how much compression reinforcement is required in a beam. Clear? Yes sir. तो ये जो आप कैलकुलेट करेंगे, this much reinforcement will be provided in the tension as well as in the compression zone. बस यही आपके पास फाइनली डब reinforced beam हो जाएगा. तो जो एस बार है ये हमने वैसे फॉर सिंप्लीफिकेशन मैंने आप लोगों के लिए जो जितने एडिशनल बार्स चाहिए थे हमने यहाँ पर कैलकुलेट किए. 2 बार्स, ये बिल्कुल सिंपली मैंने आप कैलकुलेशन की just for understanding, but actually you will calculate these bars from this relation. बात समझ आ रही है? मैंने तो 2 बार्स प्रोवाइड किए हैं because in excess of maximum reinforcement these 2 bars were required from simple calculation. Actually you will calculate these bars from this relation. Clear? Yes sir. Excuse me sir. जी जी. सर हमने एम अल्टीमेट में भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी रखा था सर, और फिर उसके बाद जो है ना सर एम एन मैक्स में भी रखा था सर. अगर हम उन दोनों से सर एम एन टू कैलकुलेट करेंगे तो सर ये तो सारा स्टील बस फैक्टर ऑफ सेफ्टी में चला जाएगा सर. मतलब हम यहाँ पर भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी देते हैं और उधर भी दिया है सर, दिया है सर. हाँ तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी तो लेंगे ना. ये तो स्ट्रेंथ डिजाइन में मैंने आपको कहा था, जहाँ पर भी आप कैपेसिटी लेते हैं वहाँ पर आप स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर अप्लाई करेंगे, और डिमांड जहाँ आप लेते हैं तो वहाँ पर आप लोड फैक्टर्स के साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे. ओके सर.
अब क्लियर हुई? अच्छा, अब इसमें अगर आप देखें इस इक्वेशन में the only unknown d, because d you can calculate, you can assume it will be equal to total depth minus the 2.5, and the dash you can also assume it is equal to 2.5. क्लियर? इन स्टार्ट में आप एज्यूम कर सकते हैं कि आपके पास जो कंप्रेशन रिइंफोर्समेंट है उसकी सेंट्राइड दिस, ये भी आप 2.5 एज्यूम कर सकते हैं और ये भी 2.5 एज्यूम कर सकते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? इन द स्टार्ट तो डी तो आप एज्यूम कर सकते हैं h माइनस 2.5 और डी डैश भी आप 2.5 ले सकते हैं। Phi m and max you can calculate readily for a section. mu is the demand, ये भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। And what about fs prime? The only unknown is fs prime. What will be the stress in the compression steel? This is the only unknown. If you calculate the stress in the compression reinforcement, so then you can calculate the compression reinforcement for the given demand. Clear? यहाँ तक clear है कि नहीं? Yes, sir. Clear. अच्छा, अब इसको किस तरह कैलकुलेट करेंगे? fs prime को you can calculate fs prime from the strain diagram. The strain diagram corresponding to maximum reinforcement, because I told you that it will achieve the same strain diagram at the ultimate load. So from this you can calculate this value C. इसको आप देखें जरा, this is basically the strain in the compression steel. Clear? You can calculate this strain from similarity of triangle. This strain will be equal to E is prime. ये जरा मुझे बताइए what will be this value? C minus ds dash. C minus d dash. It will be equal to 0.003 divided by बताएं C. So from this you can calculate the value of C. C will be equal to, ये अगर आप रीअरेंज करें, ये C multiplied by E is equal to 0.003 C minus 0.003 into D prime. Clear? यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. From this you can calculate the value of E is prime. E is prime, इसको जरा अगर हम इससे E is prime कैलकुलेट करें तो E is prime will be equal to 0.003 multiplied by C minus D dash divided by C. अच्छा, अब C की वैल्यू क्या होगी? या लड़िया हमने कैलकुलेट किया था, इफ यू रिमेंबर
corresponding to maximum reinforcement, what was the value of C? Grade 40 के लिए भी हमने कैलकुलेट किया था और ग्रेड 60 के लिए भी 0.41 किया था। हाँ, ये ग्रेड 40 की corresponding। 41.37 हाँ बिल्कुल, grade 40 corresponding, if you remember, C40 it was equal to 0.41 D, and corresponding to grade 60 the value was 0.37 D। आप खुद अभी दोबारा करें जरा, चलिए आपको 0.003 divided by C, and if we take this triangle it will be equal to EY plus 0.003 divided by D minus C। इसको अगर हम रीअरेंज करें तो it will be equal to 0.003 divided by 0.006 plus EY into D। अगर ये ग्रेड 40 स्टील है तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ EY, तो बता सकता है? पॉइंट 40,000 divided by 0.013। 29,000। हाँ तो 0.00138 इसमें अगर आप पुट करें तो यू विल गेट दिस वैल्यू। ये आप जरा आप लोग कंफर्म करें, एंड इफ यू पुट EY ऑफ ग्रेड 60 विच इज 0.0021, ये अगर आप पुट करें so you will get this value। ये आप लोग कंफर्म करें, ये ठीक है ये वैल्यूज? Yes, sir. तो बस ये बिल्कुल सिंपल है। आप इस प्राइम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर ग्रेड 40 हो तो दिस विल बी इक्वल टू C विच इज 0.41 D माइनस D डैश डिवाइड बाय C। अगर ग्रेड 60 हो तो इस प्राइम विल बी इक्वल टू 0.003 इंटू 0.37 D माइनस D डैश डिवाइड बाय C। इससे आप इस प्राइम कैलकुलेट कर सकते हैं। वंस यू कैलकुलेट इस प्राइम, if the let's see last step is में once you calculate E is prime, then you can compare the value of E is prime with EY. If this calculated E is prime it is greater than EY, then your if is prime you can take if is prime equal to FY, clear? And if E is prime is coming less than EY, तो फिर क्या करेंगे? if is prime किस तरह कैलकुलेट करेंगे? DC multiply. Hooke's law से बिल्कुल। E is prime multiplied by elastic modulus of the steel. And once you calculate F is prime, so then you can calculate compression reinforcement by putting the value of F is prime in this equation. अब क्लियर है? अच्छा, अब दोबारा हम अपने प्रॉब्लम की तरफ आते हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन तो नहीं है? सर ये जो कैलकुलेशन हमने किया प्रीवियस स्लाइड पे एएस के लिए, सर ये हमने मतलब हाँ? सिर्फ जो टॉप पर कंप्रेशन में जो रिइंफोर्समेंट हमने डाला था सर, वो हमने एक्टिव कंसीडर किया, और कंप्रेशन एंड कंक्रीट सर वो हमने कंसीडर ही नहीं किया सर। तो मतलब ये कंसीडर नहीं करेंगे हम? नहीं, क्यों नहीं करेंगे? वो तो हमने कंसीडर किया। आप देखिए जरा ये क्या है? सर डी माइनस डी तो फर्स्ट प्राइम। पार्ट है। नहीं, आप फर्स्ट पार्ट को देखें ना। We have considered the compression, the concrete contribution, the compression in its first part. आप देखें तो फर्स्ट पार्ट की हमने कैलकुलेशन की, इट इज बेस्ड ऑन दिस। तो बिल्कुल सिंपल है यार। अच्छा, यहां तक कोई क्वेश्चन है कि नहीं? अब
अब दोबारा हम अपने प्रॉब्लम पर अगर आए, ये आप देखें तो अब रेडीली आप बता सकते हैं, यू कैन कैलकुलेट एस प्राइम फॉर द गिवन बीम because you know the demand it is 2203.13 inch hip and the 5 min max is also given. So from this you can calculate the AS prime. AS prime will be equal to mu minus 5 mn max अभी हमने derive किया divided by 5 fs prime d minus d prime. Clear? Now d in this case it is 15.5 and d prime we can also assume d prime equal to 2.5, but we don't know the value of fs prime. Clear? यहाँ तक clear है कि नहीं? यस सर। क्लियर है सर। अच्छा, आप ये fs prime कैलकुलेट कर सकते हैं इसी स्लाइड पर, मगर फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट ES prime. Now ES prime, since it is grade 60 steel, so what was the relation for ES prime? 0.003 into 0.37 d minus d dash divided by c. अच्छा, इस c को भी आप रिप्लेस कर सकते हैं विथ 0.37 d, इसको आप 0.41 d से रिप्लेस करें। क्लियर है ना? यस। अच्छा, यहाँ पर आप जरा ये पुट करें वैल्यू, दिस इज इक्वल टू 0.003 into 0.37 d minus d prime which is 2.5, या डायरेक्ट आप इसमें बस ये वैल्यूज जरा पुट करें, 0.37 into d which is d is 15.5 here minus d prime which is 2.5 and divide by 0.37 into d which is 15.5. इससे जरा इस प्राइम कैलकुलेट करें शाबाश। 0.00169. दोबारा जरा बताएं। 0.00169 169। Now अभी जरा बताएं, it is less than yield strength or greater than yield strength? Greater. Less than. It is less than, because yield strength of the 60 is equal to 0.0021. Clear? So you can calculate fs prime by this relation. Fs prime will be equal to 0.00169 multiplied by elastic modulus of the steel which is 29,000. ये जरा वैल्यू बताएं शाबाश। 49.01। 49 के साइड, तो यहाँ पर ये पुट करें ये वैल्यू, एफएस प्राइम की वैल्यू। अब आप लोगों के पास ये भी वैल्यू भी है, दिस इज 2203.13 minus 5 mm max which is 1768 inch tip। पाई की वैल्यू आपके पास है 0.9, fs prime is 49, d is 15.5 and d prime is 2.5। तो ये जरा वैल्यू बताएं शाबाश। वैल्यू कितनी आ रही है?
0.6, 0.76. Zero point 0.76. Yes, sir. Zero point 0.76 inch square. It is the compression reinforcement required. Clear? अच्छा, इससे अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं दी नंबर ऑफ बार्स। तो अगर आप देखें जो हमने एज्यूम किए थे तकरीबन वही बार्स इससे भी आते हैं। ये ठीक है ना? ये आप लोगों ने कंफर्म की 0.76 इंच स्क्वायर। Yes, sir. अगर इससे भी हम नंबर ऑफ बार कैलकुलेट किए करें तो इट इज कमिंग 0.76 डिवाइड बाय 1.7 almost 2. ऑलमोस्ट 2 बार आर रिक्वायर्ड। तो ऑलरेडी हमने ये किया था, एज्यूम किया था, बट बेस्ड ऑन द एक्चुअल कैलकुलेशन वी आल्सो रिक्वायर्ड दोस 2 नंबर 6 बार्स। अब क्लियर है? दिस इज हाउ यू कैन डिजाइन नाउ दीज 2 बार. Yes, sir. These 2 bars will be given in the compression as well as in the tension zone. Clear? Sir. अब फाइनली आपके पास टोटल बार्स टू बी प्रोवाइडेड इन द टेंशन जोन ये कितना होगा? ए एस प्राइम प्लस ए एस मैक्सिमम। क्लियर? Total reinforcement to be provided in the tension zone will be equal to how much? AS total to be provided in the tension zone, it will be equal to AS max plus this AS prime. Clear? And reinforcement provided in the compression zone, it is equal to AS prime. अब क्लियर है ये बात? सर टेंसाइल साइड में वो 6 बार भी हम प्रोवाइड करेंगे और ये 2 एक्स्ट्रा भी प्रोवाइड करेंगे कंप्रेशन वाले। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आप देखें these will be required from the demand. सर जी सर एक्चुअली अगर हम 2 नंबर 6 बार प्रोवाइड करना ये तो 0.88 स्क्वायर इंच एरिया आता है और जो हमने कैलकुलेट किया वो 0.76 हाँ, तो इसमें हम कौन सा वो प्रोवाइड करेंगे? जो आपने प्रोवाइड किया है ना 0.88 इंच स्क्वायर आप प्रोवाइड करेंगे ना सर ये तो इंक्रीज नहीं हुआ 0.76 से? नहीं तो यही रिइंफोर्समेंट आप कंप्रेशन में भी देंगे ना। बात समझ में आ रही है? यही रिइंफोर्समेंट आप कंप्रेशन में भी देंगे तो इट विल अचीव द सेम डक्टिलिटी रिक्वायरमेंट। सर यानी फाइनली जब आप इसकी डिजाइन करेंगे तो आप इस तरह करेंगे कि एस मिक्स, व्हाट वाज द एस मिक्स रिक्वायर्ड फॉर दिस बीम? 2.51। तो आप फाइनली इस तरह करेंगे कि टोटल रिइंफोर्समेंट आप के पास होगी 2.51 प्लस एस प्राइम कमिंग फ्रॉम दिस विच इज 0.76 इंच स्क्वायर। इन दोनों को आप ऐड करें जरा। 3.271 3.3 271 27, and from this you will calculate the number of bars. So total number of bars to be provided in the tension zone will be equal to 3.27 divided by 0.44.
प्लीज जरा वैल्यू बताइए शाबाश। 7.4। 7.4, so almost it is equal to 8 number 6 bars। तो ये मैंने ऑलरेडी किया था आप लोगों को सिंपल समझाने के लिए। From the actual calculation also you need 8 number 6 bars। And what about the compression zone? The compression reinforcement. So the compression reinforcement, you know that AS prime is equal to 0.76. So from this you can calculate the number of bars, 0.76 divided by 0.44. Okay. So almost 2 number 6 bars are required. Clear? So finally you will provide 8 number 6 bars in the bottom region or in the tensile portion of the beam, and 2 number 6 bar will be provided in the compression zone. Clear? अब क्लियर है? सर हमारे पास कैलकुलेशन से जो वैल्यू आई थी इसकी 3.37 थी पहले जो आई थी सर। सर अगर हम ये कंप्रेशन और टेंशन दोनों कंसीडर करें तो ये एरिया उससे ज्यादा नहीं आएगा? नहीं, ये उससे ज्यादा नहीं आएगा। इट विल डिपेंड ऑन द whether the compression force yields or not, the compression reinforcement। अगर आपके पास if the compression reinforcement is yielding, तो फिर ये वैल्यू उस इससे भी ज्यादा कम होगी, बिकॉज द in that case you will be utilizing the full strength of the steel in the compression zone, तो उससे वो इकोनोमाइज हो जाएगी। सही। तो फाइनली आप देखें, वी विल प्रोवाइड 4 + 4 bars in the tension zone and 2 bars in the compression zone। This is basically the design of a doubly reinforced beam or the flexure। Clear? सर जी जी सर 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 जी अगर ये जी यील्ड करे जी। या ना यील्ड करे, इस प्राइम की यो जो वैल्यू हमने कैलकुलेट किया 0.76 ये हम डालेंगे इसमें। हाँ बिल्कुल, 0.7 से उसका तो उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इफ इस प्राइम आपने कैलकुलेट किया, इट इज कमिंग 49, and based on this you calculated the S prime which is coming 0.76। सही है। ये 0.76 तो आपने इसी के बेस पर कैलकुलेट किया ना। अब क्लियर है ये? Yes, sir. सर जी जी। लेकिन एक्चुअली जब हम बार डालेंगे ना कंप्रेशन जोन में या वो टेंशन जोन में, ये जो एक्स्ट्रा 2 बार डालेंगे ये तो 0.88 वो एरिया का होगा ना। हाँ तो ये तो इससे रिड्यूस है, तो हम इस तरह किस ये प्रोवाइड करेंगे? तो ये तो ज्यादा अच्छा होगा ना। आप जितना भी ज्यादा कंप्रेशन में रिइंफोर्समेंट डालेंगे उतना ये ज्यादा डक्टाइल हो जाएगा। Why? Because it will basically increase the compression capacity of the beam। तो the compression capacity increase का मतलब ये that the crushing of concrete will be delayed। सही। आप 2 बार्स की बजाय अगर 3 नंबर 6 बार प्रोवाइड करें तो इट विल बी ज्यादा अच्छा होगा। सही। ज्यादा तो हम डाल सकते हैं, कम नहीं कर सकते। सही। सर जी जी। सर इससे अच्छा, अब पहले जो फाइनली कैलकुलेशन आपने, हाँ इससे पहले जो क्या था? कैलकुलेशन हमने कैलकुलेशन की थी एएस के लिए, जब हमारे पास डबल रिइंफोर्समेंट बार्स की मतलब बीम्स की कंसेप्ट नहीं था सर, तो एएस वैल्यू रिजेक्ट हो गई है। बस इस कैलकुलेशन इस बेस पे करेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नहीं नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं। वो तो मैं जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए किया था कि अगर आप फॉर एग्जांपल आपने
सिंगल रिइंफोर्स्ड बीम के बेस पर आपने रिइंफोर्समेंट कैलकुलेट की, इट इज कमिंग ग्रेटर देन एस मिक्स। अब ये जो ज्यादा जितना रिक्वायर्ड है अगर वो हम टेंशन में प्रोवाइड करें एज वेल एज इन द कंप्रेशन तो बीम कहेंगे। वो तो मैंने जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए की, एक्चुअली तो आप ये कैलकुलेशन करेंगे। सही, ओके सर, थैंक यू। सर ये तो हमें डायरेक्टली वहां से भी पता चलता है क्योंकि ये तो एग्जैक्टली उसी हाँ वहां से आपको अंदाजा हो जाएगा, मगर एक्चुअली आप इन इक्वेशंस को यूज करके इसको डिजाइन करेंगे। सही, ओके सर। जी जी सर वॉइस क्लियर है? आवाज क्लियर नहीं है सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर बेसिकली स्टील का जो स्ट्रेंथ है सर वो तो मटेरियल प्रॉपर्टी है। अगर हम यहाँ पे सर नंबर ऑफ जो कंप्रेशन बार है ना सर, जो 0.76 को हमने 0.44 यानी 6 बार के लिए हमने इसको डिवाइड किया है। अगर हम इसका सर साइज मतलब बढ़ा दें कि 8 नंबर का जो एरिया उस पर डिवाइड कर ले तो जो डिजाइन है उस पर इफेक्ट करेगा कि नहीं? हमारे साथ की सर नंबर ऑफ बार भी कम आ जाएंगे सर, तो ये इफेक्ट करेगा कि नहीं? अच्छा, अब आप माइक ऑफ करें। आपका क्वेश्चन जो मैं समझा वो ये कि आप कहते हैं कि अगर हम नंबर 6 बार की बजाय नंबर 8 बार यूज करें, ये बात करें ना? यस सर। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप नंबर 8 बार यूज करें, मगर इसमें ये कि आप ये अगर आप कंप्रेशन रिइंफोर्समेंट को देखें, ये अगर आप नंबर 8 बार यूज करते हैं कंप्रेशन रिइंफोर्समेंट को अगर आप देखें तो इसमें यू विल नीड ओनली 1 बार, तो एक बार तो आप प्रोवाइड नहीं कर सकते ना, यू विल एटलीस्ट प्रोवाइड 2 नंबर ऑफ बार्स। तो कंप्रेशन रिइंफोर्समेंट में यू विल यूज नंबर 6 बार। क्लियर? टेंशन में तो आप कर सकते हैं बिकॉज इंस्टेड ऑफ 8 नंबर 6 यू विल नीड फॉर एग्जांपल 4 नंबर 8 बार्स। क्लियर? सर इस तरह से प्रोडक्शन में भी बने थे सर जो बात जगह सर जो प्रोवाइड करते हो टाइम देखिए, आप यहाँ पर देखें ना, सिंपल है ना, ये 0.76 इंच स्क्वायर इज रिक्वायर्ड इन द कंप्रेशन जोन। तो इससे अगर आप नंबर 8 बार के लिए कैलकुलेट करें तो यू विल नीड 1 बार, तो एक बार तो आप प्रोवाइड नहीं कर सकते, यू विल प्रोवाइड एटलीस्ट 2 बार्स, तो इसलिए आप नंबर 6 बार ही यूज करेंगे कंप्रेशन में। हाँ, टेंशन में आप दोनों को अगर आप ऐड करें यू नीड 7.4 इंच स्क्वायर, इससे आप नंबर 8 बार कैलकुलेट करें तो वो आप कर सकते हैं, यानी आप टेंशन में इंस्टेड ऑफ number 6 bar you can use number 8 bar, because instead of 8 number 6 bar you will need for example 4 number 8 bar. Clear? और सर इसमें भी ये कंसेप्ट नंबर एंड नंबर बार शुड बी लेस देन और इक्वल टू 2। बिल्कुल वही है ना, बार्स तो दो से तो आप कम नहीं कर सकते। नहीं मतलब जो डिफरेंस है ना कंप्रेशन और टेंशन साइड्स पे बार नंबर के डिफरेंस। नहीं वो इसमें नहीं है, वो जो बार साइज डिफरेंस आप मैंने आपको बताई थी, इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर दिस, यानी इसमें आप नंबर अगर नीचे आप नंबर 8 बार यूज करें तो आप ऊपर नंबर 5 बार भी यूज कर सकते हैं। क्लियर? यस सर, क्लियर। उसमें ये रिक्वायरमेंट भी नहीं है कि फॉर एग्जांपल इफ यू नीड 3 बार्स इन द कंप्रेशन तो आप इस तरह प्रोवाइड कर सकते हैं, यानी वो जो हमने पढ़ा था इफ यू रिमेंबर कि ईच बार इन द सेकंड लेयर शैल बी प्रोवाइडेड ओवर द फर्स्ट लेयर बार्स, तो दैट रिक्वायरमेंट is applicable only for tensile reinforcement और only compression reinforcement। इन दोनों के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। कंप्रेशन में आप
डिफरेंट मगर सिमेट्रिक होना चाहिए। क्लियर? यस सर। सर जी जी पूछे। पहले हमने चेक करना। हाँ तो बिल्कुल सिंपल है, आप कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम ट्रायल एंड एरर डिजाइन इन्फोर्समेंट। इफ डिजाइन इन्फोर्समेंट इज कमिंग ग्रेटर देन मैक्सिमम इन्फोर्समेंट, so you will design it as a doubly reinforced beam. क्लियर? या आपके पास डायरेक्टली, जो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में सेक्शंस दिए थे, किसी सेक्शन के लिए आप डायरेक्टली मैक्सिमम कैपेसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। इफ योर डिमांड इज ग्रेटर देन दिस कैपेसिटी, मैक्सिमम कैपेसिटी, so you will design it as a doubly reinforced beam. Clear? यस But if the sizes are restricted, अगर साइज पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, so then you can increase the depth of the beam and you can design it as a singly reinforced beam. If the sizes are restricted, if you cannot increase the size of the beam, then you can design the beam as a doubly reinforced beam. Clear? अच्छा, यहाँ तक Sir. अगर क्लियर है तो इसमें जी सर कौन सा ज्यादा इकोनॉमिकल होगा? इसको तो आप इस तरह कंपेयर नहीं कर सकते कि कौन सा ज़्यादा इकोनॉमिकल होगा, बिकॉज अगर आप डेप्थ इंक्रीज करते हैं तो उससे आपके पास कंक्रीट ज़्यादा उसमें यूटिलाइज होगी। अगर आप डेप्थ सेम रखना चाहते हैं तो फिर उसमें रिइंफोर्समेंट ज़्यादा होगी। नॉर्मली सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम विल बी मोर इकोनॉमिकल देन द डबली रिइंफोर्स्ड बीम, मगर डबली रिइंफोर्स्ड बीम हम स्पेसिफिक सिचुएशन में करेंगे ना। यस सर। If the size is restricted, then आप मजबूरन डबली रिइंफोर्स्ड बीम ही डिजाइन करेंगे। क्लियर? यस सर, थैंक यू। अच्छा, इसमें अब एक फाइनल स्टेप करते हैं। फाइनली मैक्सिमम रिइंफोर्समेंट और मैक्सिमम रिइंफोर्समेंट लिमिट ऑफ ए डबली रिइंफोर्स्ड बीम, इसको हम जरा कर देते हैं। सही? What is the maximum reinforcement limit of doubly reinforced beam? तो मैं डायरेक्टली आप लोगों को वो इक्वेशन लिख देता हूं, हम फिर कमिंग क्लास में उसको डिराइव करेंगे। A is max for the doubly reinforced beam, it is equal to A is max for singly reinforced section plus A is prime into Fs prime divided by Fy। इसका क्या मतलब है? In simple words, the range of maximum reinforcement will be increased। अब बात समझ में आ रही है ना? And what is this A is prime? This is not that 0.76 inch square. This will be the actual compression reinforcement which you have provided in the beam. So actual compression reinforcement कितना है? 2 multiplied by 0.44, which is coming 0.88 inch square. So AS prime is basically the actual reinforcement which is provided in the beam multiplied by the stress in the compression reinforcement, which in our case it was 49. Clear? And divide by Fy, which is the yield strength of the steel. Clear? तो फाइनली आप इसको दोबारा चेक करें। A is mix, in our case it was 2.5 or sorry, it was 2.51 inch square plus A is 0.88
multiplied by Fs prime is how much? 49 divide by 60. ये जरा कैलकुलेट करें the maximum reinforcement allowed in a doubly reinforced beam. Quickly मुझे जरा वैल्यू बताएं. 3.23. 3.24 inch square. अच्छा, this is the maximum reinforcement allowed in a doubly reinforced beam. Clear? In the given section. Now the provided reinforcement shall be less than this value. अब provided reinforcement जो है, total provided reinforcement in the tensile zone, it is equal to 8 number 6 bar. इस तरह है कि नहीं? Yes, sir. 8 multiplied by 0.44. इससे जरा कैलकुलेट करें. 3.52. 3.52. Now the provided reinforcement, it is greater than the reinforcement allowed in a doubly reinforced section. अब क्या करेंगे? अब इसका आसान हल ये कि आप instead of 2 bars in the compression zone, if we provide 3 bars, यहाँ पर आप देखिए जरा, instead of 2 bars, if you provide 3 bars in the compression zone, so this will basically increase the maximum reinforcement range of doubly reinforced beam. क्योंकि अगर आप देखें doubly reinforced beam में आपके पास जो maximum range है, it depends on this reinforcement, compression reinforcement, actually provided compression reinforcement. So instead of 2 bars, if we provide 3 number 6 bars, तो अब जरा कैलकुलेट करें शाबाश. 3 multiplied by 0.44 is coming how much? 1.32. 1.32. तो यहाँ पर आप पुट करें and recalculate the maximum reinforcement. ये वैल्यू दोबारा कैलकुलेट करें. 3.588. 3.58 inch square. Now you can see that the provided reinforcement is less than the maximum reinforcement allowed in a doubly reinforced beam. So your design is finally okay. सर ये कंडीशन क्यों है ऐसा? ये कंडीशन इसलिए ना कि आपने फाइनली जो हमने ये किया है that the strain value corresponding to 0.003 the strain value in the tension reinforcement will be EY plus 0.003 corresponding to the compression strain value of 0.003. Clear? अगर आपके पास maximum reinforcement से provided reinforcement ज़्यादा हो तो उस केस में आपके पास strain diagram will be like this. The strain in the tensile steel at the crushing, at the time of crushing, will be less than this value. अब क्लियर है? यस सर, ये वैल्यू हम इंक्रीज करते हैं EY प्लस 0.003 को, इसी वजह से हम वो डालेंगे. हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए. सर ये 3 बार जो हमने कंप्रेशन पे प्रोवाइड किया तो टेंशन वाले साइड पे भी ये 3 प्रोवाइड करेंगे, उसमें 2 ही रहेंगे? नहीं 2 ही रहेंगे, बिकॉज दैट हैज सेटिस्फाइड द गिवन डिमांड. अब ये जो हमने 3 किए, दिस इज जस्ट टू सेटिस्फाई द डक्टिलिटी रिक्वायरमेंट. The strength requirement is satisfied for 2 bars. Clear? But now we have increased the compression reinforcement just to satisfy the ductility requirement. Clear? Yes, sir.
अच्छा, अब we will quickly go through the slides of the lecture. ये सारे चीज़ें वहाँ पर भी है, but now I think you have understand this very well. So now we will quickly go through the slides. यहाँ तक तो कोई क्वेश्चन नहीं ना? No, sir. First of all, Sir. the background, the problem in increasing the capacity of the beam is the restriction that AS should not exceed AS max. This places a restriction on the maximum flexure capacity of the beam. ये सारे हम डिस्कस कर चुके हैं, सही? If AS exceeds AS max, what will happen? The strain in concrete will reach a value of 0.003 before ES reaches EY plus 0.003. ये already हम डिस्कस कर चुके हैं, सही? Thus violating the ACI code recommendation for ensuring ductile behavior. इसमें कोई confusion तो नहीं है ना? No, sir. No, sir. No, sir. नहीं, sir. However, if either the strength of concrete is increased or some reinforcement is placed on compression side, the load at which strain will reach a value of 0.003 will be increased, and the crushing will be delayed. Clear? When this happens, AS on tension side can be increased without compromising ductility, which will also increase the flexure capacity of the beam. ये मैं काफ़ी डिटेल से पढ़ा चुका हूँ, जो स्ट्रैंड डायग्राम वगैरह मैंने आपको स्टार्ट में समझाई, वही चीज़ें, सही? Practically, this can be achieved simply by placing some amount of additional reinforcement AS prime on both faces, tension and compression of the beam. This will increase the range of AS max. Clear? In this case, the beam is called as doubly reinforced beam. ये उसकी मैकेनिक्स है, ऑलरेडी हम डिटेल में कर चुके हैं, आप जरा इसको देखें. फाइनली अगर आप देखें तो AS prime is equal to mu extra, which is mu minus phi Mn max divided by phi Fs prime d minus d dash. Clear? Yes, sir. अच्छा, ये कंडीशन है, इसको आप फिलहाल छोड़े. कंडीशन एट विच इफ इस प्राइम विल बी इक्वल टू एफ वाई, यानी इसमें हम एनफोर्स करते हैं दैट द कंप्रेशन वी विल सेलेक्ट दैट डेप्थ ऑफ बीम फॉर विच द stress in the compression reinforcement will be equal to Fy, or you can say that the condition for which the compression reinforcement will also yield. तो इसकी जरूरत नहीं है, मैंने आपको कहा कि डायरेक्ट बस आप Fs प्राइम कैलकुलेट करें, उसको आप कंपेयर करें. if it is yielding तो आप डायरेक्ट Fs प्राइम Fy के बराबर ले सकते हैं. if it is not yielding तो बस आप हुक्स लॉ से Fs प्राइम कैलकुलेट करें. क्लियर? तो ये हम स्किप कर देते हैं. ये मैंने आपका ये मिनिमम डेप्थ से फॉर विच द कंप्रेशन रिइंफोर्समेंट विल यील्ड. अच्छा, मैक्सिमम रिइंफोर्समेंट की जो रेंज है वो भी यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं. फाइनली अगर आप उसको देखें, इट इज इक्वल टू एस मैक्सिमम एस मैक्स फॉर सिंगली प्लस एस प्राइम एफ एस प्राइम डिवाइड बाई एफ वाई. बिल्कुल एक सिंपल सी अगर आप देखें डेरिवेशन है. द कंप्रेशन फोर्स का resisted by the concrete, compression force resisted by the compression steel, it will be equal to the T, the total tensile force. उसमें अपने values आप डालें and finally you will get this as T max for W reinforced beam. It is equal to S max for singly multiplied by plus this term. Simple है ना? वही कंडीशन है, आप देखें if C is equal to 0.41 D for grade 40 और C is equal to 0.37 D for grade 60, तो फिर आप इसको 0.85 if C prime beta 1 CB इसको आप ले सकते हैं AS max for singly and AS prime if S prime
और इसको this will be the maximum reinforcement allowed in the double reinforced beam. Clear? ये क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. Clear. Yes, sir. Proceed करें सर. अच्छा, तो ये फाइनली आप देखें, दिस इज, यहाँ पर आप देखें ये नोट इंपॉर्टेंट है, द टोटल स्टील एरिया एक्चुअली प्रोवाइडेड AST as tension reinforcement must be less than AST mix by equation. यहाँ पर आप देखें AST mix for a singly reinforced it is a fixed number, वो तो आप रेडीली कैलकुलेट कर सकते हैं जिस तरह आपने इस सेक्शन के लिए ऑलरेडी कैलकुलेट किया है 2.51 इंच स्क्वायर. AS prime is steel area actually placed on compression side. So this is not that 0.76 inch square. This is that area which you have actually placed in the compression as a compression reinforcement. Clear? Yes. इस स्टेप्स से ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं. अब ये एग्जांपल जरा देखें. Design the given reinforced concrete beam for an ultimate flexure demand of 4,500 inch kip. The beam sectional dimensions are restricted. Clear? You cannot increase the size of the beam due to architectural requirement, aesthetic requirement, or any other requirement, but there is a restriction on the beam size. Material strengths are FC prime 3 KSI and FY 40 KSI. अब इसमें आप देखें directly the effective depth is given, it is 20 inches and the width of beam is 12 inches. Clear? Now for this 12 inch width and effective depth of 20 inch, you can calculate the maximum reinforcement. अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलते हैं तो साइजेस तो गिवन है ऑलरेडी. Load is given in the form of moment. Analysis step की जरूरत नहीं because moment is already given. अगर हम इससे ट्रायल एंड एरर से कैलकुलेट करें reinforcement, so it is coming 8.75 inch square. Clear? For the given demand. Now AS maximum for this beam it is 5.4 inch square. Clear? Now this is coming greater than AS max. The given beam cannot be designed as a singly reinforced beam because ACI 318 code doesn't allow to use AS greater than AS max. Clear? Now designing the beam as doubly reinforced beam. So first of all आप area calculate करेंगे from trial and error. If the design reinforcement it is greater than the maximum reinforcement allowed in the beam, so you will design it as a doubly reinforced beam. अच्छा, doubly reinforced beam के लिए first of all you will calculate phi min max. ये तो आप calculate कर सकते हैं already. Maximum reinforcement corresponding to maximum reinforcement you will calculate the depth of compression block, and from this equation you will calculate phi min max. Clear? From this you can calculate MU extra, which is the given demand minus phi min max. It is coming 1298 inch kip. Clear? इस स्टेप की मैंने आपको बताया जरूरत नहीं है because you can calculate E is prime from that equation. Finally आप देखें जरा, AS prime is equal to MU extra divided by phi FS prime D minus D prime. ये वैल्यू आपके पास है 0.940. अच्छा, ये अगर आप देखें ये FS प्राइम, ये ऑलरेडी आप उस इक्वेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं. E is prime, if you remember, it was equal to 0.003. Since the grade of steel is 40, so for grade 40 it is C minus D prime divided by C. ये इक्वेशन थी ना? Yes, sir. So it is equal to 0.003 into C is 0.41D
minus d prime, which is 2.5, divided by 0.41 d. d is equal to 20 inches. ये आप इसमें पुट करें and give me the value of E is prime. quickly, शाबाश. एक्सक्यूज मी सर, जी सर नमाज टाइम है, थोड़ा हाँ, ब्रेक चाहिए. ये बस ये कंक्लूड करते हैं. शाबाश. वैल्यू मुझे बताएं. सर ये 0.00208 0.00 208 208. And what is the yield strength of grade 40? Point 00 138. Now the strain is greater than the yield strength. Okay, so the strain in compression reinforcement is greater than the yield strain. So you can take Fs prime equal to Fy. Clear? So that is why here you can see that Fs prime is equal to Fy, which is 40. Ab clear hai? Yes, sir. Yes, sir. Acha, D is 20 and D dash is 2.5. So As prime is coming 2.06 inch square. Clear? Now the total reinforcement required in the tension zone is As mix plus As prime. So As mix was 5.4 and As prime is 2.06. So 7.46 inch square reinforcement is required in the tension zone. If we are using number 8 bar, so and if we take the bar area equal to 0.8 inch square instead of 0.79, अगर हम round up करें, the number of bars to be provided on tension side is equal to 7.46 divided by 0.8, so it is equal to 9.32. Clear? So instead of 9.32, we will provide 10 number 8 bars. Clear? And number of bars to be provided on compression side, it is equal to As prime, which is 2.06 divided by 0.8. So 2.6. So instead of 2.6, we will provide 3 number 8 bars in the compression zone. So आप देखिए यहाँ पर finally provide 10 number 8 bars on tension side, and instead of 3 number 8 bar, we have provided here 4 number 8 bars on the compression side. Why? सर ये सहमति तो फॉलो नहीं कर रहा. हाँ, ये अगर आप फाइनली जब हम चेक करेंगे ना, तो these 3 bars, these will not be sufficient from ductility to satisfy the ductility requirement. That is why even at this stage we have increased the number of bars from 3 number 8 bar to 4 number 8 bar. Clear? Yes, sir. अच्छा, अब आप देखिए जरा, इस केस में आपके पास the maximum reinforcement rate, it will be equal to As mix plus As prime, because Fs prime is also equal to Fy. ये ऑलरेडी हमने किया ना, बात समझ में आ रही कि नहीं? तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास As T mix will be As mix for singly reinforced beam plus As prime. तो इसमें आप देखिए As mix is 5.4 and As prime is the actually provided reinforcement, which is 4 multiplied by 0.8, so it is coming 3.2 inch square. So the maximum reinforcement allowed in the double reinforced beam is 5.4 plus 3.2, it is coming 8.6 inch square. Clear है कि नहीं? सर. Yes, sir. सर. जी जी. सर ये 3 बार्स की जगह जब हमने 4 बार वो जी प्लेस किए ना, तो आपने कहा कि डक्टिलिटी रिक्वायरमेंट हो, और यहाँ पर जो होता है मिक्स पर डबल रिइंफोर्समेंट वो ग्रेटर है ना AST से, हाँ, जो कि 8 इंच स्क्वायर है. ये फिर ये तो ओके है, फिर क्यों हमने 1 मोर
बार रख दिया आपको ऊपर। वो तो ऑलरेडी तो आप सेटिस्फाइड उसमें है सर। 3 जरा डालें ना, अब 3 बार सर आप 3 से इसे पुट करें और 7.8 फिर आ आप रहा देखें है। कि ये हाँ 3 से सेटिस्फाइड 7.8 आ रहा है, नॉट सेटिस्फाइड। समझ गए कि नहीं ये जिसने क्वेश्चन किया? नो सर। देखिए आप ये जो आप कह रहे हैं यहाँ पर कि ये तो ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, ये ऑलरेडी सेटिस्फाइड नहीं है, ये हमने 4 उसमें प्लेस किया है 4 नंबर 8 बार, इसलिए सेटिस्फाइड है। अगर हम 3 बार यहाँ पर पुट करें तो अब आप मैक्सिमम रिइंफोर्समेंट जरा कैलकुलेट करें, इट विल कम 7.8 in square. Now 7.8 in square is less than the provided reinforcement, which is 8 in square. Clear? यस सर, समझ गया। So that is why we provided 4 bars. So अगर हम 4 बार provide करें so it is coming 8.6 in square, and the provided reinforcement in the tension zone it is 10 number 8, so 10 multiplied by 0.8, 8 in square. So 8 in square is less than the maximum reinforcement allowed in the double reinforced beam, so the requirement is satisfied. Okay, and this is finally the drafting. You can provide the bars in 3 layers, 4 plus 4 plus 2 number 8 bars, and 4 number 8 bars they are provided in the compression zone. This is the end of lecture. If you have any question, अच्छा अब आप इसके लिए अगर आप लोगों को याद हो फॉर सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम हम लास्ट में एक स्टेप करते थे to provide to calculate the actual capacity of the beam based on the provided reinforcement, and we check that capacity with the given demand. याद है आप लोगों को? Yes, sir. तो अब आप ये आपकी एक होम असाइनमेंट है, इस बीम की जो आप एक्चुअल कैपेसिटी है बेस्ड ऑन द प्रोवाइडेड रिइंफोर्समेंट ये आप कैलकुलेट करें and compare it with the demand which was equal to how much? 4,500 inch cube. Based on the provided reinforcement, calculate the maximum capacity, the capacity of the beam, and compare it with the demand on the given beam. Clear? Yes sir. तो एक आपकी होम एक्टिविटी हो जाएगी, ये आप करें और फिर मुझे बिफोर कमिंग क्लास मुझे ज़रा दिखाएं. Okay, sir. Any question? Do you have any question in this lecture? No sir, clear.